हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1, व्हिच इज L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. L and M both are parallel and another pair of parallel lines P and Q intersect this pair of parallel line and show that triangle ABC, this triangle is congruent triangle CDA. CDA and ABC both are congruent. Solution: given that given P parallel to Q and L parallel to M. Okay, P Q के पैरेलल है and L M के पैरेलल है. both pairs of parallel lines intersect to each other. Okay students, now to prove, we have to prove that triangle ABC is congruent triangle CDA. ABC CDA के congruent है. Okay, proof. Students, we have two methods to solve this question. देखिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं. फर्स्ट, both lines P and Q are parallel and L and M also are parallel. Both intersect to each other at AD and BC. So AB parallel to DC and AD parallel to BC. Okay, it means opposite sides are parallel. This means ABCD is a parallelogram. So now taking in triangle ABC and CDA, you can prove both are congruent. And another way is L and M parallel to each other and AC is a transversal line. Then this angle is equal to this angle by the pair of alternate interior angle, and this angle is equal to this angle, and this side is common side. We can say by AAS, congruence rule of triangle, both are congruent. Okay students, जैसा आपको सुइटेबल लगे वैसा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. So in triangle ABC and triangle CDA, angle BAC is equal to angle ACD. Pair of alternate interior angles. ओके स्टूडेंट्स, आप इन्हें नंबर से मेंशन कर सकते हैं. 1 2 3 and 4. 1 is equal to 4 and 3 is equal to 2. Angle DAC is equal to angle ACB. This angle is equal to this angle ACB, the pair of alternate interior angles. Okay students, and AC is equal to AC, or you can say AC is equal to CA, common side, because हमने ABC and CDA लिया है, तो this side is equal to this side, AC is equal to CA. by AAS congruence rule
triangle triangle ABC is congruent triangle CDA. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हिच इज लाइन L. Line L, this line is the bisector of angle A, means this angle is equal to this angle, okay? And B is any point on L. B जो है वो इस लाइन पर L पर कोई एक पॉइंट है, ओके? BP and BQ, BP and BQ are the perpendiculars from B on the arms of angle A. एंगल ए की जो आर्म है इसे हम आर्म कहते हैं, इस पर ये परपेंडिकुलर है, मींस ईच 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, then show that first ABP this triangle is equal is the triangle ABP is congruent triangle AQB. This triangle, this and this both are congruent triangles, and BP is equal to BQ. BP and BQ both are equal, or you can say that B is the equidistant from the angle A. B जो पॉइंट है वो एंगल ए की आर्म से दोनों तरफ से बराबर दूरी पर है। बोथ आर द सेम मीनिंग। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। Solution is, first what is given we will write. L is the bisector of angle A. This implies QAB angle QAB is equal to angle PAB. PAB, okay, and BP and BQ perpendicular on arms of angle A. BP and BQ perpendicular है, it means this implies angle BQA is equal to angle BQA is equal to BPA. BPA is equal to 90. Both are 90 degree. In triangle APB and triangle AQB, APB, AQB, angle QAB is equal to angle PAB. PAB. This is given. Okay. AB is equal to AB. Common side, and angle BQA is equal to angle BPA, each 90 degree. This is also given by AAS congruence rule. Triangle APB is congruent triangle AQB. This is proved. फर्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो चुकी है। बोथ ट्रायंगल्स आर congruent. Congruent means therefore the pairs of corresponding angles and their sides will be equal. This implies, second question, BP is equal to BQ. BP is equal to BQ. Yes, by CPCT, corresponding part of a congruent triangle. By CPCT, BP is equal to BQ. You can say that B is equidistant from the arms of angle A.
एंगल ए की जो आर्म्स हैं उनसे बराबर दूरी पर है, इट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी की दोनों आर्म से बराबर है, इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।